Hi everyone, this is the sixth lecture for your chapter Neural Control and Coordination. In the last class, we saw generation of action potential, then in this nerve impulse conduction, okay, so how the signals or the impulses are passed through the axon. Today, we will study how these impulses or signals are passed from one neuron to another neuron. Right, so last class we saw only in a single neuron. Today we will see it how it is transferred from one neuron to another. Let us begin. So this is called transmission of impulse. Right, we have seen generation of impulse, then impulse conduction, and this here is transmission of impulse. Now impulse transmission occurs at places called synapse. Okay, synapse नाम की जगह पे होता है. There are two types of synapses, electrical synapse and chemical synapse. We shall begin by understanding electrical synapse. So the electrical synapse, in electrical synapse, the membranes of pre and postsynaptic neurons are in very close proximity. अभी तुम इधर देख सकते हो, this is your axon and this swollen part is called axon terminal or your synaptic bulb. Clear? And bottom one, the blue one shown in the bottom, is your dendrite. Okay, so dendrites we have studied. So this here is your dendrite. Fine. So the membrane, okay, and in between the space that you see, fine, that is called a synaptic cleft. Cleft matlab khali jaga. Okay, this space that is formed in between. So the membrane that you see above this synaptic cleft is called presynaptic membrane. So this here is the presynaptic membrane, and the membrane beneath the synapse, okay, is called synaptic cleft, sorry, is called postsynaptic terminal. Pre का मतलब होता है पहले, post का मतलब होता है बाद में. ठीक है, तो pre जो है that will be your axon terminal membrane, and postsynaptic membrane is actually your dendrite membrane. ठीक है, they are in very close proximity. Proximity का मतलब होता है nearness. So they are very near to each other. कितना near? So around 2 nanometer जितनी ही जगह होती है between the two membranes. Okay, they are very close to each other. The electrical current can flow directly from one neuron into the other neuron. Okay, so we have seen कि कैसे action potential जो है it is traveling. Fine. Now this action potential, it will be directly transferred to the next neuron. ठीक है, तो इस तरीके से directly the electric current can flow from one neuron to another neuron across these synapses, very similar to the impulse conduction along a single axon. हमने जैसे single axon में कल पढ़ा था वैसे ही ये synapse के through from one neuron to another neuron this impulse is conducted. The impulse transmission across an electrical synapse is faster than that across a chemical synapse. Okay, तो ये जो electrical synapse जो है that is faster, okay, and it occurs through these channels that you're seeing. These channels are actually gap junction channels. हमने cell chapter में we had studied gap junctions. So here you can see the gap junction channels, okay, through which the charges will flow, okay, and through which the current will flow to the next neuron. Fine. And yeah, so it is faster क्योंकि electricity जितना speed से जा सकती है वैसे ही ये भी full speed से it can be conducted. Clear? But these electrical synapses are rare in our system. Fine, they are faster but they are rare in our system. अभी बच्चे पूछते हैं मुझे कि मैम अगर electrical synapse fast है तो why is our system not made up of electrical synapse? हमारे system में ये rare क्यों है? So the answer is that these impulses, okay, they cannot be controlled. इन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते तुम. ये जैसे आएगा वैसे ही पास ऑन हो जाएगा फटाफट से. So there is no control on these impulses. कि कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए. When you should stop these impulses. अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको आगे मत जाने दो. Nothing like that. एक बार impulse आ गया तो वो आगे conduct होता ही रहेगा, transmit होता ही रहेगा. ठीक है? Now think of it like this. तुमने कभी देखा है कि जो इलेक्ट्रिकल शॉक किसी को लगता है
right? And their whole body starts to shake and all. The same thing can happen here. अगर तुम्हारे बॉडी में अगर सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल साइनाप्स ही होते, then what could happen? If one of the neuron has gone crazy, okay, एक न्यूरॉन पागल हो गया और एक के ऊपर एक वो इम्पल्स जनरेट किए ही जा रहा है, okay, because it is crazy. So वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है, these impulse are getting transmitted, और ये इम्पल्स का फटाफट से कंडक्शन हो रहा है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ओके। और ये न्यूरॉन ऑफ कोर्स जो भी ऑर्गन है, जो भी जगह है, उधर तक ये सिग्नल लेके जाएगा, राइट। सो दिस कैन लीड टू सम इम्बैलेंस। अभी वो ऑर्गन जो है वो अपने आप से फायर करता ही रहेगा, राइट। सो दिस इज व्हाई इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो है इट इज नॉट वेरी कॉमन इन आवर सिस्टम। क्लियर? देन व्हाट इज कॉमन और व्हाट इज मोस्टली फाउंड? These are called chemical synapses. Chemical synapses are characterized by synaptic cleft. ये synaptic cleft क्या चीज है? तो it is the space, okay, between the two membranes, okay, the post synaptic membrane and presynaptic membrane के बीच की जगह जो है, it is called synaptic cleft. तो जहाँ पे आपको synaptic cleft easily दिखता है, that is mostly a chemical synapse. And what is the speciality? As the name suggests, chemical synapse, इसका मतलब इधर nerve impulse transmission जो है that will occur with help of chemicals called neurotransmitters. Okay, these chemicals which help in transmission are called neurotransmitters. Now these neurotransmitters are small molecules. They are synthesized in the cell body or cyton, or they can also be synthesized in axon terminal. Here they are small organic molecules, they are small chemicals. या तो वो cell body में synthesize होते हैं or they are synthesized in the axon terminal. Clear? These neurotransmitters, sometimes referred to in short form as NT, are filled in vesicles at the axon terminal. आपको ये axon terminal पे vesicle के अंदर filled दिखेंगे, ठीक है? Vesicles are nothing, they are single membraned organelle like structures, okay? जैसे हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से वेसिकल बनते हैं, right? So same way here, the vesicles, they are filled with neurotransmitters. Now if you see here, this is your swollen region is your axon terminal, also referred to as synaptic bulb, जिसको synaptic bulb भी बोलते हैं. Now in this synaptic bulb you can see all of these are the vesicles, okay, और we vesicle के अंदर it is filled with the neurotransmitters. On the left you can see a microscopic picture, okay, of the same, and ये जो छोटे छोटे rounds है, they are actually your vesicles and they are filled with the neurotransmitters. Clear? Your axon terminal is also very rich in mitochondria. Either mitochondria का number जो है that will also be very high, okay, because ATP is required for the process. What process we will see in some time. Before that, let us understand chemical synapse a little better. So it is a junction between two neurons where information is transferred from one neuron to the other neuron. Okay, it is a junction. Synapse is a junction. And this transfer of information is happening through neurotransmitters. The membrane of axon terminal is called presynaptic membrane. Here, this is your presynaptic membrane. And the membrane of your dendrite, okay, of the next neuron is called postsynaptic membrane. ये जो membrane है, which is of your dendrite of the next neuron, it is called postsynaptic membrane. The space between the two membranes is called synaptic cleft. And so if you want to define a synapse, it is this presynaptic knob. ये पूरा जो synaptic knob है वो synaptic cleft, बीच में जगह जो है वो, and the postsynaptic membrane. Clear? All three of these together, you can call it a synapse. Now we have mentioned neurotransmitters. Let us understand types of neurotransmitter. Okay, हमने ऐसे बोला कि chemical synapse जो है, either you can control, okay, whether the signal will pass or will it not pass. So this control is brought by neurotransmitters. ये control जो है वो neurotransmitters की help से होता है. So there are two types of neurotransmitters. You can have stimulatory neurotransmitters or inhibitory neurotransmitters.
स्टिम्युलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उसका दूसरा नाम है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. Both the names, stimulatory means to stimulate और excitatory means to excite. तो इस टाइप के जो न्यूरोट्रांसमीटर है दे कॉज नर्व इम्पल्स जनरेशन इन द नेक्स्ट न्यूरॉन. ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जब भी रिलीज होंगे तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन में ये इम्पल्स जो है वो जनरेट करवाएंगे. ठीक है, so they cause nerve impulse generation in the next neuron. Examples are acetylcholine and norepinephrine. Norepinephrine is also known as noradrenaline, जो हम next chapter में पढ़ेंगे. Okay, noradrenaline is just another hormone which is secreted by your adrenal medulla. ठीक है, ये नाम याद रखना. तो chemically both of these things are same. Noradrenaline और norepinephrine दोनों same thing है. But norepinephrine we normally call it when it is secreted by your neurons. ठीक है, आपके nervous system में सगल निकलता है ये हार्मोन, then you call it norepinephrine. अगर आपके adrenal gland से निकलता है then you call it noradrenaline. Otherwise both of the things are same. एक ही molecule है. Fine. Now coming to the reaction they are doing. Okay, क्या काम कर रहे हैं, what is the work? So here look at this, it is an excitatory synapse. ये excitatory synapse पे जब impulse आएगा, okay, when the nerve impulse conduction will occur in the axon terminal, it will release this glutamate. Glutamate is a type of stimulatory neurotransmitter. अभी इसका जो list है, it is very long, right? So I have not mentioned all of the neurotransmitters because it is out of your syllabus, but a few which you should know I have mentioned. राइट, सो ये ग्लूटामेट जो है वो भी एक एक्साइटेटरी या स्टिम्युलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. व्हाट विल इट डू व्हेन इट बाइंड्स टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन? वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके जैसे ही बाइंड करेगा इट विल कॉज सोडियम इनफ्लक्स. और हमने पढ़ा ही था कल, सोडियम इनफ्लक्स होगा देन यू हैव डीपोलराइजेशन. If there is depolarization then action potential is said to be generated, right? तो इस तरीके से from one neuron to another neuron the impulse is transmitted. Now let us talk about the second type of neurotransmitters called inhibitory neurotransmitters. As the name suggests, they inhibit the generation of nerve impulse in the next neuron. ये नहीं चाहेंगे कि आपका next neuron जो है उसमें nerve impulse generate हो. ठीक है, examples are GABA, serotonin, dopamine, glycine, etc. अभी कुछ ऐसे हैं जो आप दोनों में देख सकोगे in some textbooks, okay, but here just focus on these names, these few names, and we will consider them as inhibitory. Fine. So now GABA, I don't know if you remember, but हम जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे तो we studied amino acids and we said कि जो प्रोटीन में दिखता है they are only the alpha amino acid or primary amino acid which were of 20 types which are seen in your proteins. इसके अलावा भी in your body there are hundreds of different variety of amino acids. One of them is this GABA. अभी इसका पूरा नाम होता है gamma aminobutyric acid. Let me draw it for you so you can understand why this is an amino acid. Okay, so 1, 2, 3 and 4 carbons, COOH, right? Butyric acid, butyric means 4, acid meaning carboxylic acid group, so ये हो गए 1, 2, 3, 4. Now gamma amino, now the carbon which has the functional group attached to it is called alpha carbon, तो ये हो गया आपका alpha carbon. उसके बाजू में बीटा कार्बन and the last one is your gamma carbon. So on the gamma carbon you have amino group, so here you have NH2. Clear? So when you look at this molecule, this can also be called an amino acid. क्योंकि definition क्या थी amino acid की? That one molecule has both amino group as well as carboxylic acid group. तो वो तो इसमें भी आपको दिखेगा. See, here you can see the carboxylic acid group and here you can see the amino group, right? So this is also an amino acid, but इस type के amino acid को बोलते हैं secondary amino acid. ठीक है, इसलिए फिर हम specify करते हैं कि जो भी प्रोटीन में हम सीखते हैं या पढ़ते हैं तो all of those are alpha amino acid. Alpha amino acid का मतलब होता है on the same carbon you will have COOH
as well as NH2. ठीक है, तो इधर NH2 भी आ जाएगा on the same carbon. Fine, and that is why we call them alpha amino acids. चलो, enough about that biochemistry revision. अभी let us come back to this inhibitory neurotransmitter. तो GABA आपको अब याद रह जाएगा, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, सेरोटोनिन, डोपामीन, ग्लाइसिन. ग्लाइसिन इज अनदर अमीनो एसिड. ठीक है, तो ये सारे जो है दे आर इनहिबिटरी. इसका क्या मतलब होता है? Then let us understand with this bottom diagram. इस synapse पे when the nerve impulse will be conducted. Okay, so the nerve impulse is being conducted. It has reached the axon terminal. अभी axon terminal से GABA release होगा. Okay, now this gamma aminobutyric acid या GABA will go and bind the postsynaptic membrane. Clear? Now this postsynaptic membrane, it will actually open the chlorine ion channels. तो क्लोरीन जिसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा, that chlorine will start coming in. अगर नेगेटिव आयंस अंदर आएंगे तो what will happen? The negativity inside will increase even more, right? So this condition is called hyperpolarization. Hyperpolarization का मतलब you can see here कि वो -70 is polarized, right? We had studied कि polarized मतलब होता है कि एक तरफ नेगेटिव है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ पॉजिटिव है. So this condition is polarized condition. Hyperpolarization मतलब तुम -70 मिलीवोल्ट से भी ज्यादा नेगेटिव -90 मिलीवोल्ट तक जा सकते हो. ठीक है, तो इफ योर वोल्टेज और इफ योर polarized state is -90, तो ये -90 को +30 या +40 तक ले जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, राइट? इफ यू वांट टू ब्रिंग अबाउट डीपोलराइजेशन इन सच काइंड ऑफ अ न्यूरॉन, अगर तुमको ऐसे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, डीपोलराइजेशन करना है, देन यू विल हैव टू वर्क इवन हार्डर, राइट? क्योंकि -90 से +30 लेके जाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट. सो हियर द सिग्नल विल नॉट बी ट्रांसमिटेड. ओके, इधर से आगे के न्यूरॉन में कोई सिग्नल जनरेट होगा नहीं एंड द सिग्नल विल स्टॉप देयर. तो इस तरीके से यू आर एबल टू कंट्रोल एंड यू आर एबल टू मॉड्यूलेट विच सिग्नल्स शुड पास, विच सिग्नल्स शुड नॉट पास. ठीक है, समझ सकते हो? तो ये कंट्रोल जो है इट कैन अकर थ्रू न्यूरो ट्रांसमिटर्स. एंड सो द केमिकल साइनाप्सेस आर फाउंड in majority, okay, in our body, right? So let us understand acetylcholine. Okay, it is a very simple excitatory neurotransmitter और आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो we will understand how it is functioning. You have this acetylcholine, इसके ऊपर का आपको जानना जरूरी नहीं है. That is showing just how acetylcholine is made. Okay, it is made from acetyl CoA and choline. चलो, so this here the molecule is called acetylcholine. Acetylcholine is filled in your synaptic vesicle. ठीक है, अभी ये synaptic vesicle what will happen? Let me show you in the previous diagram. ये diagram थोड़ा better है. So here you can see when the nerve impulse reaches your axon terminal. ठीक है, तो in this axon terminal there are special type of ion channels called voltage gated calcium ion channel. इसका मतलब जब nerve impulse आएगा तो जो भी voltage का change होगा, okay, that will induce these calcium ion channels to open. Calcium ion channels open हो गए तो बाहर से अंदर calcium आना शुरू. This calcium when it reaches inside, okay, now you can see these purple balls, they are actually showing you the calcium ions. These calcium ions will bind onto your vesicles. ठीक है, अभी vesicle membrane जो है it is very sensitive to calcium. जैसे ही उस पे calcium bind होना शुरू हुआ, it will try and fuse with the cell membrane. ठीक है, तो ये वेसिकल सारे नीचे की तरफ मूव होंगे and they will fuse with this membrane. ठीक है, जैसे ही वो फ्यूज होना शुरू हो जाएंगे वेसिकल membranes, okay, with your presynaptic membrane, all of the neurotransmitter inside will be now outside. Okay, they will be secreted outside. तो ये orange जो आपको दिख रहा है that is your neurotransmitter. अभी ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसका रिसेप्टर इज नथिंग, इट इज अ प्रोटीन जो रिसीव करेगा. ठीक है, तो ऐसे रिसेप्टर्स जो है विच आर शोन हियर इन ग्रीन, दे आर प्रेजेंट ऑन योर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. मतलब वो डेंड्राइट के ऊपर प्रेजेंट है.
जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमिटर्स दे कम एंड बाइंड, ओके, यू कैन सी कि ये ऑरेंज कलर के बॉल्स जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड हो गए. देन द रिसेप्टर इज मोस्टली अ आयन चैनल. वो आयन चैनल नॉर्मली होता है, तो वो आयन चैनल ओपन हो जाएगा. और जैसे ही ओपन हुआ तो सोडियम जो है इट विल स्टार्ट कमिंग इन. इफ द सोडियम स्टार्ट्स कमिंग इन, देयर इज डीपोलराइजेशन. और इस तरीके से तुम्हारे नेक्स्ट न्यूरॉन में भी नर्व इम्पल्स कंडक्शन शुरू हो जाएगा. ठीक है, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, और एंड दिस एक्शन पोटेंशियल विल कंटिन्यू. क्लियर? हाय. नाउ देयर इज वन मोर पार्ट यू शुड नो, कि एक बार ये एसिटाइल कोलिन का काम हो जाता है, राइट, देन इट शुड नॉट स्टे देयर. अभी इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ऐसे ही नहीं रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक बार सिग्नल पास ऑन हो गया फिर फ्री ना, उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं है. अगर वो ऐसे ही चिपका हुआ रहेगा, देन द नेक्स्ट न्यूरॉन जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, इट विल ऑलवेज रिमेन एक्साइटेड. वी डू नॉट वांट दैट. एक बार सिग्नल पास हो गया बस है. So what will happen? This acetylcholine will be degraded. उसको तोड़ दिया जाएगा. And this happens with help of acetylcholine esterase enzyme. ठीक है, acetylcholine esterase. वो choline और acetate के बीच में जो bond होता है उसको break कर देगा. Now you have free acetate and you have choline. This choline and this acetate, they are normally brought back in. ठीक है, उसको reabsorb कर लिया जाता है in your presynaptic membrane, and these are recycled. उसको recycle किया जाता है so that you are ready for the next nerve impulse. ठीक है, तो just look at this. You can see these are the vesicles. जैसे ही nerve impulse आया, vesicles are fusing. Your neurotransmitters are binding to the receptors. Receptor जैसे ही खुल गए, so all of the ions will move in. अभी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर था, इट वाज ब्रॉट इन, ओके, उसको रिसाइकल किया गया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से. जस्ट फोकस ऑन दिस. ओके, न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन हो गया, इट इज फ्री नाउ, इट विल मूव, एंड उसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से अंदर वापस ले लिया जाएगा. क्लियर? सो दिस इज हाउ क्लियरेंस विल हैपन. चलो, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फुल सिनेरियो, अभी हमने सब पढ़ लिया. ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर होता है नर्व इम्पल्स कंडक्शन इन योर एक्सॉन्स, एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू केमिकल्स इन योर साइनेप्सेस. ठीक है, सो लेट अस जस्ट कवर इट ऑल अप विद द फंक्शनल और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ योर नर्व इम्पल्स कंडक्शन. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी जो स्पेसिफिक है. For example, the first property is that conduction will always be unidirectional. एक ही direction में जाएगा signal. Right? Now, you may be asking कि मैडम ऐसे कैसे इंश्योर कर सकते हो आप? For example, here you can see कि ये सोडियम जो है वो इधर भी आगे भी कर सकता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट, पीछे भी कर सकता है. Right? We have seen the current moves from positive to negative and positive to negative. Right, so it can occur on the both sides. ये आगे भी nerve impulse को लेके जा सकता है, पीछे भी लेके जा सकता है. But why does it not happen? क्यों नहीं होता है? तो the answer is hyperpolarization. अभी याद करो, हमने कल ही ये पढ़ा था पूरा ग्राफ, right? So we had seen -70 is your resting membrane. फिर depolarization होगा तो -70 से positive 30 या positive 40 millivolt तक जाएगा. Repolarization में it will again come back to -70, और actually repolarization में it can go below -70, मतलब ये -90 तक जाएगा, and then it comes back to -70. तो ये जो एरिया है, this is called hyperpolarization, जैसे हमने इनहिबिटरी में पढ़ा था. ठीक है, तो क्या होगा अभी, जहां पे ऑलरेडी नर्व इम्पल्स कंडक्ट हुआ है, उधर देर विल बी दिस रिफ्रैक्टरी पीरियड, उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं. ठीक है, सो इन दैट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो छोटे से एरिया में, फॉर एग्जांपल हियर, ओके, दिस इज योर फर्स्ट एरिया जहाँ पे सबसे पहले डीपोलराइजेशन हुआ था और अभी रिपोलराइजेशन हो रहा है. तो इन दिस एरिया देर विल बी नो नर्व इम्पल्स कंडक्शन फॉर सम टाइम. ठीक है, कुछ टाइम के लिए कोई भी सिग्नल आएगा तो वो कंडक्ट नहीं कर सकेगा, एंड दिस टाइम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड, and this is because of hyperpolarization. वो इतना नेगेटिव हो चुका है अंदर कि थोड़े सोडियम अंदर आने से तो उधर सिग्नल ट्रांसमिट होगा भी नहीं. ठीक है, डीपोलराइजेशन होगा भी नहीं. तो दिस इज द रीजन व्हाई
nerve impulse conduction is only moving ahead in one direction. It cannot go back. It follows the all or none law. मैंने ये भी आपको बोला था कि या तो होगा या नहीं होगा. There is no आधा होना आधा ना होना. ठीक है? So it follows the all or none law. So look at this graph, the bottommost graph here. आप देख सकते हो नीचे जो दिखाया है, that is the stimulus strength. आपको किसी ने नॉर्मल टच किया, थोड़ा जोर से टच किया और फिर एक झापट लगाया. ठीक है? So these are the stimulus. Okay, just for example, do not take it personally. हाँ, चलो. So you have these three stimulus. ठीक है? तो आप देख सकते हो कि पहले अगर कोई नॉर्मली टच करता है, इतना आपको पता नहीं लगा, right? So it is not able to cross the threshold. आपका जो ऊपर की तरफ जो ग्राफ है, that is showing you the membrane potential. तो ये -70 जो है, that -70 is continued क्योंकि stimulus इतना हाई नहीं था कि depolarization कर सके. Now here you can see कि वो threshold से थोड़ा ही ऊपर जा रहा है, right? So you are able to cross that threshold. Threshold हमने discuss किया था is -55. अगर -55 से बढ़ा voltage तो action potential जो है वो generate होगा. So here you can see वो barely above है, okay? ये line के barely ऊपर है, threshold के barely ऊपर है. तो here the action potential will be generated. और अगर आपको किसी ने झापट लगाया, right? So that is a very strong stimulus. तो वो strong stimulus में भी you can see that the action potential will be generated. Now this is just one thing you should know कि जो आपको नॉर्मल थोड़ा प्रेशर से टच किया या झापट लगाई उसमें आपको ऐसा लगेगा, आप ऐसे सोचोगे कि मैडम जो डीपोलराइजेशन हो वो एकदम ऊपर जाएगा, राइट? दिस ग्राफ विल गो वेरी हाई अप अगर आपको किसी ने झापट लगाया और अगर टच किया तो ऐसे होना चाहिए. बट नो, दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस. ठीक है? हमेशा जो भी एक्शन पोटेंशियल है इट विल रिमेन बिटवीन दीज लेवल्स ओनली. वो -70 से +30 या -90 से +40 तक ही रहेगा. उससे ज्यादा ऊंचा या उससे ज्यादा नीचा नहीं जाएगा. ठीक है? तो व्हाट हैपेंस इज यू कैन सी दैट द एम्पलीट्यूड रिमेन्स द सेम. वो +30 तक ही जाएगा बट द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग. आप देख सकते हो उसका नंबर बढ़ गया. अगर आपको किसी ने झापट लगाई तो एक्शन पोटेंशियल का नंबर ज्यादा है. अगर किसी ने आपको सिर्फ प्रेशर से टच किया देन द नंबर इज लो बट एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट हो रहा है. ठीक है? सो दिस इज हाउ द स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस और अ वीक स्टिमुलस इट इफेक्ट्स. ठीक है? तो ऑल और नन, या तो होगा या नहीं होगा. अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया तो देयर विल ऑलवेज बी एन एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड. अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर सके देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड. Velocity of nerve impulse is dependent on diameter of axon. अभी कितनी स्पीड से जाएगा ये सिग्नल, ये डिपेंड करता है on the diameter of axon. जितना axon मोटा होगा, okay, if the diameter is higher or larger then the nerve impulse conduction velocity will be higher. ठीक है? If the axon diameter is smaller then the nerve impulse conduction rate will be also slow. Of course we have already seen myelination and unmyelinated fibers. So वो तो आपको पता ही है, अगर myelinated है तो fast, non myelinated है तो slow. This velocity, okay, velocity is speed and because you have a direction तो उसको आप velocity बोलते हैं. So velocity is affected by physical and chemical factors like pressure, cold, heat, chloroform, ether, etc. तो ये कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी वेलोसिटी, ओके, ऑफ द नर्व इम्पल्स कंडक्शन. सो हियर वी एंड द नर्व इम्पल्स कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन. कैसे सिग्नल जनरेट होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है एंड फाइनली पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग व्हिच इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. Okay, reflexes are आपने सुना ही होगा when you let us say you are watching a kung fu movie, then you say that oh his reflexes are so good, right? इसके reflex तो देखो यार धांसू एकदम. Okay, so this what are these reflexes? Let us understand. Marshall Hall was the scientist who first observed these reflex actions. Okay, he was the first one who actually studied it and called them reflex action. The entire process
of response to peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily is called your reflex action. ठीक है, पूरी process है where um, there is a response being generated to a peripheral nervous stimulation. ठीक है, तुम्हारी peripheral nervous system जो है, sensory nervous system जो है, उसको stimulation कुछ मिला है, and to the stimulation there is also a response which has been generated. जो भी stimulation था उसके सामने जवाब भी बन के तैयार है. Then this response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, मतलब आपने कोई conscious effort नहीं डाला है, you have not put any thought to it, it is happening on its own. Okay, then it is known as reflex action. For example, you can look here. तुम देख सकते हो कि कैसे ये pupil है. What is happening to this? Okay. हाँ, तो this is called your pupil जो black है बीच में. तो if you go out in sunlight, अगर आप अचानक से धूप में जाओगे तो your pupil become smaller, right? उसकी size छोटी हो जाती है. And if you come in dark room, then your pupils dilate. Dilate होना मतलब बड़े हो जाना. So if you talk about this response, it is occurring without your conscious effort. You are not controlling this, right? It is just happening on its own. Then this can be called a reflex action. Second thing, आप ये वीडियो को देखो अभी एक snake है and that snake directly jumped at this man. तो वो आदमी जो है, he did not stand there and think कि अभी मेरे को bend होना चाहिए, right? As soon as that snake, okay, he tried to jump on that man and bite that man, वो अपने आप से that man he bent, okay, he moved away. So this again is a reflex. आप अगर क्रिकेट में बात करो तो क्रिकेट में भी कहाँ से बॉल आ रहा है, कैसे आपको बिना देखे ही बॉल को कैच कर लेना है, यू आर रेडी टू कैच दैट बॉल, देन दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस ये अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो फोकस हियर, दे आर स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाले, अचानक से होने वाले. ठीक है, स्पॉन्टेनियस, इनवॉलंटरी, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दीज, ओके, दे आर हैपनिंग ऑन देयर ओन. Mechanical responses produced by stimulation of specific receptor. कुछ receptors है जिन्होंने signal sense किया, stimulus को sense किया. They send this information to your central nervous system. Central nervous system ने कोई mechanical response दिया. Clear? So this whole is known as reflex. So the reflex pathway, it compromises of at least one afferent neuron and one efferent neuron. अभी efferent efferent का काम कैसे याद रखना है? I told you, afferent means arrival, efferent means exit. ठीक है, so here you can see this is your spinal cord or your central nervous system, and this is your organ which has receptor. तो ये receptor से आपने किसी ने pin अगर आपको लग गई, right? If there is a pin which got inserted into your skin, let us say, so what will happen? These receptors will receive the signal, they will send this signal to your central nervous system. तो ये जो neuron है which is shown in pink, that will be called your afferent neuron. ठीक है, वो signal लेके आ रहा है तुम्हारी central nervous system के तरफ. Then your central nervous system, it will decide something and send out a signal. So the signal which is moving away from the central nervous system, okay, that neuron will be called efferent neuron. इसके दूसरे नाम जो है दे आर सेंसरी न्यूरॉन. एफेरेंट जो है उसको सेंसरी भी बोल सकते हो आप, इफेरेंट को मोटर न्यूरॉन भी आप बोल सकते हो. ठीक है, द एफेरेंट न्यूरॉन रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट्स द इम्पल्स वाया डॉर्सल रूट टू द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये डॉर्सल रूट था, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ऑल ऑफ दिस वी हैव स्टडीड इन स्पाइनल कॉर्ड. So through this dorsal root, it will send the signal to central nervous system, which is spinal cord. Now the spinal cord, mostly reflex action में spinal cord ही decision लेता है because it is supposed to be a quick decision. So the spinal cord will take a decision, and that decision, that signal will be passed on through this motor neuron to the effector organ, which could be a muscle. This path of completion of a reflex action is called reflex arc. ये जो पूरा path create हुआ, okay,
That path is known as reflex arc. Fine? Okay. Now there can be different types of reflex actions. Before that, let us just understand this a little bit कि कोई पूछेगा कि इफेक्टर जो है वो मसल कैसे हुआ. So let us say कि आपने कहीं पे ऐसी पिन पड़ी थी and you touched it by mistake. तो क्या होगा? You will take away your hand from there, right? तो hand के muscles काम करेंगे. तो इस तरीके से इफेक्टर जो है that is a muscle. Okay? तो जैसे ही आपका पिन पे टच हुआ हाथ और आपने हाथ वापस खींच लिया, तो that whole action is called a reflex action. Clear? Right. Now let us understand types of reflexes based on sight. मतलब कौन है जो रिफ्लेक्स का डिसीजन ले रहा है. ठीक है. So based on the sight you have cranial reflex and spinal reflex. Cranial reflex वो normally एकदम slow होता है and it is controlled by your brain. Okay, as the name suggests, cranial का मतलब होता है brain. तो तुम्हारा brain जो है वो ये reflexes handle करेगा. There is no urgency required in these actions. वो एकदम slowly काम करेगा. There is no urgency. ठीक है, ऐसा पिन वाला सीन नहीं है. So let us see here. For example, you have a glass of water. Your eyes, which are the receiver, okay, or receptor, they are looking at this glass of water. तुमको प्यास लगी है. Fine. So what will happen? Your receptor or your eye, it will see or it will look at the glass of water. ये सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन की ओर. ब्रेन जो है it will make a decision and then tell, or through your motor neuron it will tell your hand, okay, hand muscles to grab that glass of water और फिर उसको पीना है. So whole of this you can say कि थोड़ा टाइम लगता है. It is controlled by brain. There is no urgency and the reactions are slow. The second example could be salivating at the smell of food. आपने कहीं पे पानी पूरी बनी है और let us say पाव भाजी. ठीक है. So when you just smell that पाव भाजी, your mouth starts watering or salivating. हम ऐसे बोलते हैं ना, मुंह में पानी आ जाना. तो this can happen at sight of food, at smell of food, at thought of food, but इसमें कोई urgency नहीं है. So it happens quite slowly. ठीक है. So all of these are example of cranial reflex. Now let us talk about spinal reflex. These actions are controlled by a spinal cord. As you can see, ये green वाला जो है that is showing your spinal cord neuron. Okay. तो there is some urgency. इसमें कोई urgent matter होता है, तुमको फटाफट से decision लेना है. So the actions are also fast. जैसे हमने इससे पहले पढ़ा reflex arc के टाइम पे, if you touch a pin or if you touch something hot or if you touch something which hurt you, okay, तो तुम्हारा हाथ तुम्हारा पैर उधर से एकदम से you will take it back, right? So this action is called a spinal reflex. There is no urgency. It is controlled by a spinal cord and these are very fast actions. Example, taking your hand away from hot objects. Now you must have seen this also. This is called a patellar exam. Patella जो है वो इधर का एक covering होता है. Your kneecap is scientifically called patella. So this here is your patellar reflex. ये आपका neurons कितने functional है and all of that are checked. Okay, what will the doctor do? He has a sort of hammer और वो hammer को ऐसे पटेला पे जैसे ही पटकेगा. Okay, he touches this hammer to your knee. Then your knee, it on its own, it moves like this. Okay, तो इसको knee jerk reaction बोलते हैं and this happens in very it happens very quickly. Okay, तो ये spinal reflex का एक example है. Now let us talk about types of reflexes based on previous experience. इससे पहले हमने पढ़ा types of reflexes based on the sight. It could either be brain or it could either be spinal cord. Now we are studying types of reflexes based on previous experience. मतलब तुमने पहले experience किया है कि नहीं किया है. So the first type of experience or first type of reflex rather is called conditioned reflex. Okay, conditioning हुआ है. So conditioned reflex. So previous experience is required to complete these actions. Example is swimming, cycling, dancing, singing.
तुम अपने आप से सोचो, इफ यू हैव लर्नड स्विमिंग, इफ यू हैव लर्नड साइकिलिंग, या फिर डांसिंग आपने सीखा है, ड्राइविंग सीखा है, देन इन द बिगिनिंग, ओके, दीज, लेट मी शो यू, हाँ, इनिशियली दीज एक्शंस आर वॉलंटरी। ठीक है, जब आप सीख रहे हो कैसे ड्राइव करना है या आप सीख रहे हो कैसे स्विम करना है, एट दैट टाइम दीज एक्शंस आर वॉलंटरी, सो देर इज सम प्रीवियस एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे ही आपको आ जाता है, once you are very comfortable with these actions, they become involuntary. अभी कभी कभी आपने देखा होगा ना कि साइकिल पे जा रहे हो तो तुम सोच कुछ और रहे हो लेकिन फिर भी घर पहुंच जाते हो। सो दिस इज बिकॉज दीज आर कॉल्ड कंडीशनड रिफ्लेक्स। तूने जब साइकिल चलाना सीखा था, देन यू वर पेइंग फुल अटेंशन, इट वाज अ वॉलंटरी एक्शन। लेकिन जैसे ही तुमको आ गया साइकिल चलाना, देन इट बिकेम इनवॉलंटरी। Clear? Same with swimming, dancing, singing, etc. Now, this condition reflex was first studied by a scientist called Ivan Pavlov. Okay, बहुत famous experiment है, Pavlov experiment on his dog. Now, let us understand what he did. Okay, what was this experiment? So here you can see there is a dog, and here you have given him food. तो फूड को देख के वो सलाइवेशन शुरू हो जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस हियर इज कॉल्ड अनकंडीशनड रिफ्लेक्स और रिस्पॉन्स। क्योंकि ये तुमने कंडीशन नहीं किया है, डॉग को बोलना नहीं पड़ता है कि आपको फूड को देख के सलाइवेशन करना है, राइट? दिस इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, उसने फूड को देखा और सलाइवेशन शुरू कर दिया। So this is before conditioning and this is unconditioned response. फिर एक घंटी है and you are pressing this bell and there is no response from this dog, because what is the relation between bell and the dog, right? No response. There will be no salivation. Now what this Pavlov did, he experimented for a few days, and whenever he used to feed the dog, he used to also ring the bell. Okay, वो bell बजाएगा, उसके बाद उसको खाना देगा। सॉर्ट ऑफ लाइक योर रिसेस टाइम्स, राइट? तुम स्कूल का सोचो, जब रिसेस होने वाला होता है तो बेल बजता है ना, एंड एज सुन एज द बेल स्टार्ट्स रिंगिंग, यू नो कि अभी खाने का टाइम हो गया, राइट? सेम थिंग द डॉग ऑल्सो, दिस पावलॉव, ही यूज्ड टू रिंग अ बेल एंड देन गिव हिम फूड। तो ये डॉग ने अभी क्या सोच लिया, उसके दिमाग में क्या बैठ गया कि व्हेनेवर देयर विल बी अ बेल रिंगिंग ही विल ऑल्सो गेट फूड। ठीक है, तो इसने ये एक रिस्पॉन्स अपने दिमाग में सेट कर दिया कि इफ द बेल रिंग्स आई विल गेट फूड। अभी पावलो जो है उसने क्या किया, बहुत छाना आदमी, ही एक्चुअली जस्ट रैंग द बेल। ठीक है, अभी उसने देखा कि सिर्फ बेल रिंग करने से भी द डॉग, ओके, ही स्टार्ट्स सलाइवेटिंग, जो कुत्ता जो है वो सलाइवेशन शुरू कर देता है। इवन वेन देर इज नो फूड, उधर फूड कुछ नहीं है, खाना कुछ नहीं है, बट फिर भी बेल को सुनने के बाद जो कुत्ता है इट विल स्टार्ट सलाइवेटिंग। सो फ्रॉम दिस, बिफोर कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग, यू कैन सी कि एक रिफ्लेक्स डेवलप हो गया कि अभी बेल सुनने पर भी दिस डॉग इज स्टार्टिंग टू सलाइवेट, जो पहले नहीं होता था। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स, ओके, डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। Then you have unconditioned reflex, जिसमें there is no requirement of previous experience. Example, sneezing. आपको किसी ने सिखाया कि छींक कैसे खाना है? नहीं ना? Then coughing, yawning, sexual behavior for the opposite sex, right? Then migration in birds, all of these behaviors, they are not taught to the people. They are not taught to the animals. ये जो है, these are also known as innate behaviors or unconditioned reflex. फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा जो होता है, इफ यू हैव सीन कि उनको उंगली दो, देन दे विल ग्रैब दैट फिंगर वेरी स्ट्रांगली। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, ओके, आवर एंसेस्टर्स, दे एक्चुअली यूज्ड टू लिव ऑन ट्रीज, तो उसके बच्चे जो है उनको पकड़ना पड़ता था ब्रांचेस। सो इन आवर बेबीज ऑल्सो व्हाट डू? दे हैव दिस रिफ्लेक्स, ओके, इट इज एन अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, उनको कहीं पे सिखाया नहीं जाता, बट उनके अंदर ये रिफ्लेक्स होता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। छोटे जब होते हैं तब दे विल ग्रैब योर फिंगर वेरी टाइटली। देन यू हैव दीज टर्टल बेबीज, जो टर्टल्स होते हैं जैसे ही अंडे में से हैच होके निकलते हैं, देन दे हैव दिस रिफ्लेक्स, ओके, उनको कोई सिखाता नहीं है, बट दे
know that they have to move towards water. उनको पानी में जाके रहना है. So these are all unconditioned reflex. आपको कोई सिखाता नहीं है फिर भी आपको आ रहा है. For example, this also you can see वो baby को जैसे ही छोड़ दिया, then he tries to open his arms and grab something, right? So this is also an innate response or unconditioned response. चलो, the last classification is types of reflexes based on synapse. ठीक है, हमने देखा types of reflexes based on sight, then types of reflexes based on previous experience, and now types of reflexes based on synapse. There could be monosynaptic or polysynaptic. जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है, monosynaptic का मतलब एक ही synapse होगा, right? Mono means one. So there is a direct synapse between the sensory neuron. Here you can see the sensory neuron. ठीक है, वो receptor से stimulus जो है, it is being conducted through the sensory neuron, okay, and it is coming till here. And then this second one, the purple one, is your motor neuron. तो सीधा sensory neuron और motor neuron के बीच में एक synapse है, okay. There is no other neuron involved, so there is only this one synapse. The nerve impulse travels through only one synapse, and the example is stretch reflex or knee jerk reflex. ये knee jerk reflex जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था, okay, in that video, कि कैसे अगर knee पे कोई आपको मारेगा तो the reflex is to kick, okay, so that is called knee jerk reflex. So these are the examples of monosynaptic. Then comes the example of polysynaptic. As the name suggests, poly का मतलब होता है बहुत सारे, okay, so there will be many synapses. There are one or more neurons in between the sensory and motor neuron. तो ये हो गया आपका sensory neuron, ये है आपका motor neuron, और दोनों के बीच में you can find this red colored neuron which is called connector or interneuron. ठीक है, so here you can see कि there are more than one synapses, okay, so the nerve impulse travels through more than one synapse. Example is withdrawal reflex. Withdrawal reflex मतलब जब आप कुछ गर्म चीज को छूते हो, या when you touch something pointed and you take your hand back, so this is called withdrawal reflex. In withdrawal reflex you have multiple neurons, okay. चलो, so there we end the lecture for today, but this was the homework I gave you. किसी ने मुझे भेजा नहीं है, तो I don't know whether you are doing your homework or not. But as a teacher, it is my duty to cover this topic as well. पता नहीं आप लोग तो अपने आप से पढ़ रहे हो कि नहीं, okay? So this is what the homework was. You had to differentiate. एक table बनाना था, difference लिखना था between parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. मैंने आपको बताया भी था कि parasympathetic is rest and digest, sympathetic is fight or flight. So very quickly we will just go through this, okay, just for your information. एक बार आपको मैं पढ़ा देती हूँ. In let us start with sympathetic. चलो, sympathetic जो है is fight or flight. जब भी emergency conditions होंगी, at that time this system will be active. Again, these are subtypes of your autonomic nervous system. Autonomic कैसे याद रखना है ये भी मैंने आपको बताया था. You can remember it as automatic. मतलब आपको करना नहीं पड़ता है, अपने हिसाब से हो रहा है. So under the autonomic nervous system you have two variations. You can either have sympathetic nervous system or parasympathetic nervous system. जब fight or flight मतलब भागो या लड़ो ऐसी condition create होती है कि there is some emergency. Let us say there is a lion in front of you, or you have to get up on the stage and talk, और तुमने कोई गलती की है और पकड़े गए. Or the last example let me give you is you have to appear for an examination. In सभी cases में there is sympathetic nervous system which becomes active. वो active हो जाती है. Now what will this system do? It will dilate your pupils. ठीक है, आपके आँख के pupils जो है वो बड़े हो जाते हैं. Why do they dilate the pupils? So that enough light can come in. Okay, तो तुमको clearly दिखेगा कि क्या हो रहा है मेरे सामने. तो if you come in front of a lion, let us say, तो तुम्हारी pupils जो है they will dilate. Then it inhibits salivation, कि तुम्हारा गला सूखने लगता है, right? When you are very nervous, you feel thirsty, तुम्हारा गला सूख जाता है. Why? Because it inhibits salivation.
तो देखो तुम इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है ना। तुम्हारी इमरजेंसी कंडीशन में या जब तुम डरे हुए होते हो, when you are frightened about something, what happens to you, just write it down in sympathetic nervous system. So it inhibits salivation, it increases the heart beat, तुम्हारी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हार्ट बीट इंक्रीज हुई देन योर बॉडी इज गेटिंग इनफ ऑक्सीजन। अगर भागना पड़ा तो ऑक्सीजन की फुल जरूरत पड़ने वाली है टू generate energy. So just to make you aware and make you awake and get you ready to fight or run away, your heartbeat increases, ठीक है। then your airways, मतलब जो ब्रोंकाई होते हैं, ट्रेकिया जो है, इट विल रिलैक्स, वो खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो दे रिलैक्स, एयरवेज रिलैक्स सो दैट मोर एंड मोर एयर कैन गो टू योर लंग्स। लंग्स में जितनी एयर ज्यादा जाएगी उतना ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगा तुम्हारे ब्लड में, एंड सो ऑल ऑफ योर पार्ट्स, ओके, ऑफ योर बॉडी, दे विल गेट इनफ ऑक्सीजन। मोस्टली दिस ऑक्सीजन इज डाइवर्टेड टू योर ब्रेन। आपको ब्रेन को पहले प्रेफरेंस देते हैं दैट मोर ऑक्सीजन शुड गो टू योर ब्रेन एंड देन टू द मसल्स। चलो, इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ स्टमक। आपको ऐसे पेट में भी थोड़ा अजीब सा फील होता है ना, व्हेन यू आर वेरी नर्वस, व्हेन यू आर वेरी अफ्रेड, तो दैट इज बिकॉज ये स्टमक की जो डाइजेशन कैपेसिटी है, डाइजेशन की एक्शन है, उसको स्लो डाउन कर देता है, इनहिबिट कर देता है। देन इट स्टिम्युलेट्स रिलीज ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो लिवर है, लिवर इज द स्टोरेज प्लेस फॉर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज नथिंग बट अ पॉलीसैकेराइड फॉर ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज जो है उसको फ्री करेगा, एंड दिस ग्लूकोज विल बी फाउंड इन योर ब्लड। तो जब भी आपको जरूरत पड़े एनर्जी की, दिस ग्लूकोज कैन बी इजीली टेकन अप। सो इट स्टिम्युलेट्स रिलीज ऑफ ग्लूकोज। इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। अगेन मैंने आपको बोला कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, उसको बंद कर देगा कि अभी उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। Then there is secretion of epinephrine or norepinephrine from your adrenal medulla. ये एड्रीनल ग्लैंड है, दिस इज योर किडनी, और किडनी के ऊपर ये ग्लैंड्स होती है जिसके बीच में से एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड दीज हार्मोन्स आर द वन विच मेक यू व्हाट यू कैन से प्रिपेयर्ड फॉर दिस फाइट और फ्लाइट, ठीक है। दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो रिलैक्स योर ब्लैडर। तो कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब डर जाते हैं तो वो गीला कर देते हैं, राइट। Their bladder, it becomes loose and they just urinate right at the point, right. So because the sympathetic nervous system, which is making you afraid, it relaxes the bladder. And the last part is it promotes ejaculation in males and vaginal contraction in females. तो ये हो गया sympathetic nervous system. अभी लेट अस से वो लायन चला गया, नाउ यू आर रिलैक्स्ड, आप अपने घर पे हो, एकदम आराम से सो रहे हो, और यू आर जस्ट सिटिंग, राइट। देन व्हाट हैपेंस, योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बिकम एक्टिव। इसको शॉर्ट में रेस्ट एंड डाइजेस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। जस्ट फ्रॉम दिस यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि क्या हो रहा होगा। सो हियर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करता है सिंपैथेटिक के। इट विल कंस्ट्रिक्ट योर प्यूपल्स। अभी तुमको प्यूपल डायलेट करने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइट के हिसाब से योर प्यूपल्स विल बी एट द नॉर्मल साइज। इट विल स्टिम्युलेट सलाइवा, वो डाइजेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब करेगा। सो इट विल स्टिम्युलेट सलाइवेशन, इट विल स्लो डाउन योर हार्ट बीट टू नॉर्मल, ठीक है। वो नॉर्मल के नीचे नहीं लेके जाएगा, बट इट विल ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल। हार्ट रेट आपको पता होगा, इट इज अराउंड 70 to 72 बीट्स पर मिनट। तो वो नॉर्मल हार्ट बीट बोला जाता है, एंड दिस नॉर्मल हार्ट बीट विल बी ब्रॉट टू दैट लेवल बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन इट विल कंस्ट्रिक्ट द एयरवेज। वो एयरवेज जो एकदम डायलेट हो गए थे उसको नॉर्मलाइज कर देंगे, कंस्ट्रिक्ट करके। कंस्ट्रिक्ट करना मतलब पतला कर देना, ठीक है। तो योर ट्रैकिया एंड योर ब्रोंकियोल्स दे विल नाउ बिकम अ लिटिल नैरो। It will stimulate activity of stomach, intestine, okay, ये stomach और intestine में digestion जो हो रहा था उसको continue होने देंगे। It will inhibit the release of glucose। अभी आप कोई कसरत वसरत तो कर नहीं रहे, तो you do not require glucose, इसलिए वो glycogen breakdown को बंद कर देंगे।
Then they contract the bladder. आप normally अगर बैठे हो तो you do not feel like urinating until and unless the bladder is fully filled. This is because the bladder, it is contracted by your uh, parasympathetic nervous system. And finally, it promotes erection in the genitals. Okay, so this is your sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system and all of its functions. तो जैसे ही मैंने आपको बताया, सिंपैथेटिक जो है वो अपने हिसाब से आप याद रख सकते हो, ठीक है. And there is this table also which I told you to make, but I did not get anybody who made this table. Fine. So here we end today's lecture, and from the next lecture we will start with the sense organs. Okay, we will cover sense of smell, sense of taste, and vision. Three in the next class, and then finally we are just left with ear, which we will cover in the last class. Chalo, see you next time.